Here, in this pandemic COVID-19, we are analyzing the economy. So everything is correlated to each other. Each variable is depending on another. If one's income spent become others' income, though it is our expenditure. But the interconnectivity and the circular flow of goods and services, factor service receive factor payments. This circulation have the influence of one to another. So, Relationship between two variables, two components, two series, and two decisions is said to be the correlation. And today we will calculate missing frequency. hereby, scholars, once again we have gathered on the platform of digital and physical connectivity. So, hereby I am presenting you with the question. So, beta, every time we have to calculate correlation. So, we put up the formula, but while having the formula, derivation is given to us. We have derived formula, we put the value, but sometimes we have been delivered with some missing values, and those missing values have to be calculated in statistics. So today we will learn how to calculate missing values in the regard of the correlation, and hereby we will discuss this question, and I have presented you with the solution because I am shooting a video. And now let's read each and every point very minutely कि बेटा हमें एक सिचुएशन दी है कि R जो correlation है वो 0.997 है. उसके बाद हमारे पास समेशन एक्स वाई गिवन है 46, मीन बार एक्स का है 4 के बाद आपको वाई बार 8, देन एक्स स्क्वायर दे रखा है 28, एंड then we have what will be the value of summation x square के बाद y square की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. दैट इज मिसिंग वैल्यू. x square तो हमें गिवन है, y square गिवन नहीं है, तो द फॉर्मूला विल बी यूज्ड हियर विल बी दिस वन. लुक, हमें ये सारी वैल्यूज ऊपर गिवन है. आई एम सेइंग शोइंग इट टू यू विद द डायगोनल लुक टू हैव होल द वैल्यू प्रेजेंटेशन कि आपको सब दिख जाए कि हमारे पास ऊपर गिवन है. लेट मी होल्ड माई कैमरा लाइक दैट that you can find out this thing. Look, R value is given. So we have R value. Summation xy given 46. Then we don't need x and y bar, but x square is given 28. Look, x square we need, so it is given 28. We don't have this value. We have to calculate this value. So he have asked this value only about y square. So let's start putting the values which are delivered to us. Look, 0.997 I have written, then 46 is given, then we have x square 28. So I have substituted the values, like R is 9.997 written, then summation xy, then we have 46, so written xy की place पर. Summation x square we have, yes, so that is 28. So I have written 28, but I don't have y square, so I will calculate y square. So the first phase is to we have written it like this, and now look how it will going to take you with. देखिए बेटा, हमें इसे अंडर रूट को रिमूव करना होगा ताकि हम जब इसे इधर लेके जाएं तो हमारे लिए क्या हो जाए, इजी कैलकुलेशन. तो अंडर रूट कैन बी रिमूव बाय स्क्वायरिंग अप. तो ऊपर डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को स्क्वायर अप करेंगे, देन हमारा अंडर रूट रिमूव हो जाएगा. सो हमारा जब अंडर रूट रिमूव हो जाएगा तो ऊपर का नंबर भी स्क्वायर हो जाएगा. सो देन वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई इट. सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट फेज. अब इससे नेक्स्ट सोल्यूशन में क्या होगा, हमने उसे स्क्वायर रूट कर लिया तो हमारा अंडर रूट रिमूव हो गया, एंड 46 इज स्क्वायर्ड. सो 2116 इज द आंसर फॉर द 46 स्क्वायर. एंड नाउ वी विल गोइंग टू पुट इट द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. दिस विल बी टेकन हियर. अब नाउ आई हैव टेकन इट इन द नेक्स्ट मूव, एंड देन इट विल बी इक्वल टू दिस वैल्यू 46 स्क्वायर. देन हम इसे सॉल्व करेंगे, तो देन वी विल मल्टीप्लाई दीज बोथ नंबर. दैट विल अकाउंट यू विद द फेज टू बी 27.832. इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन कर 28 की 0.997 से हमारा आएगा 27.832. अब जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लूंगी तो मैं इसे इसके डिनोमिनेटर
के डिनोमिनेटर के तौर पे रखूं, क्योंकि मेरे पास क्या होगा, ये वाला पोर्शन इधर ट्रांसफर हो जाएगा, मैं वाई स्क्वायर का समेशन इधर ही छोड़ जाऊंगी. So it will be remained here, and I will transfer this value at the below. So I have transferred already because I am shooting a video. So this both number will be divided, and ultimately your answer will come. Look, firstly we have substituted the value, then we have removed this under root by squaring, and after squaring we have taken cross multiplication, then we have simplified this equation, and then I brought it down in the cross dividing, and then I have the answer with the y square, and here is the answer. So this is the whole way of the calculation which you can do it, and this is the way where you can present it. I hopefully think that you have understood the missing value calculation. So firstly you have to find कि हमारे पास फॉर्मूला की कौन कौन सी वैल्यूज गिवन है. अगर जोन जोन सी वैल्यू विच एवर इज विद यू, सो यू विल गोइंग टू स्टार्ट पुटिंग देम. यू कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इन द यूज्ड फॉर्मूला. व्हेन यू विल स्टार्ट प्लेसिंग द वैल्यू, देन यू विल फाइंड वन डिजिट इज मिसिंग which you have to calculate, then bring the calculation portion introduction. So this is the whole board presentation, and hereby I am concluding it for today, with the hope that I will see you again soon. After having the missing number solution, we have find it out one way, and now it's all time to say thank you for visiting. So with the promise to see you again soon, let's conclude today.